So let's start with today's lab. We have two notebooks today, one for monitoring our machine learning models through application insights, and the other one is about monitoring data and detecting data, right? Uh, so let's just jump into the into the first notebook. Or again, we are working with the same banknotes dataset. Or first things first, I think. Let me restart create output so that we have blank space to start with. Right. Connect to your workspace, and then we have to train and register a model. Again, we are using the same decision tree classifier model, and we are registering the model in our workspace. This will take a little while. The next thing to do is to be able to deploy this model as a service, or model को as a service deploy करने के लिए remember we have to give a scoring script. अब जो भी हमने monitoring वगैरह करनी है वो through this scoring script हो रही होगी. जो sorry, the font is a little unreadable. I guess it's a bit better now. Yeah. So as I was saying, जितनी भी आपने मॉनिटरिंग वगैरह करनी है, इफ यू रिमेंबर हमारी स्कोरिंग स्क्रिप्ट के दो पार्ट्स होते हैं, इनिट एंड द रन पार्ट, राइट? तो जो भी आपने इसके अंदर लॉग्स वगैरह कलेक्ट करनी है इनटू एप्लीकेशन इनसाइड, दोज विल हैपन inside of your scoring script, inside the run function. So anything that you want to get out of here, you can by simply calling a print state. So for instance, मैंने अपने log text के अंदर अपने पूरे के पूरी data instance और उस data के against जो predictions generate की गई हैं वो यहाँ पे मैंने store करवा दी, right? Maybe मैं यहाँ पे अगर यहीं पे अगर मैं मॉडल की एक्यूरेसी वगैरह भी मेजर कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई स्कोर्ड डेटा सेट अगर इनपुट में कोई जरूरत है तो मे बी मैं वो भी यहाँ पे आउटपुट कर रहा हूँ, राइट? बट point is कि anything that you print out here inside your run function, once you enable applications inside logging on the service जो इस script को run करेगी, then all of these print statement text is going to be available in your applications inside instant, right? So let me go ahead and just write this file and create an environment configuration, which is just scikit-learn, जिसको use करके ये deploy की जाएगी, right? And now all I have to do is create an inference configuration जिसके साथ मैं अपने Azure container instances की एक web service create कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं model deploy करूँ. And yeah, so you will see कि अभी इस point के ऊपर जब मैं model.deploy call कर रहा हूँ या जो मैं deploy configuration call कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने application inside enable नहीं की है. I can do it afterwards. Either I can do it afterwards या फिर मैं ये same यहाँ पे use कर सकता हूँ, right? अपनी deploy configuration के अंदर. But let's just stick to the older method, right? We'll wait for this model to deploy.
Okay, this can take a little while, I guess. So while this is happening, maybe we can jump to the data drift notebook and see what we can get done there while this service is deploying, right? Uh, okay, so data drift को monitor करने के लिए you have to install this package, Azure ML Data Drift package, which you can get through pip. And once you install this package, make sure to restart the kernel after the installation is done, right? Again, you connect to your workspace and you create your baseline data set. आप अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं, एक अपना डेटा सेट राइट कर लेते हैं जिसको आपने एक अलग से नाम दे दिया, बैंक नोट्स बेसलाइन डेटा सेट, राइट? Then what you need to do is you need to create a target data set जिसके साथ आप डेटा ड्रिफ्ट को कंपेयर कर सकें, जिसके साथ आप डेटा ड्रिफ्ट को मॉनिटर कर सकें और उसके ऊपर आप अलर्ट्स वगैरह जनरेट करवा सकें, राइट? सो फॉर आवर ईज, क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा सेट मौजूद था, राइट? We are going to do some changes to this original data set and use that as different versions of our oncoming data set. Like in a way, we are simulating some changes which will come gradually in real life. लेकिन हम उन changes को manually through programmatically थोड़ा सा एक simulate कर रहे हैं, and then we'll see how data drift can be captured within that. So easy way to do this is कि मैं अपने बैंक नोट्स की फाइल्स में से ही एक फाइल पकड़ता हूँ और let's say we want to generate data for 3 weeks और weekly में मेरे पास same data आ रहा है but with slightly different features. So हर वीक लेट्स से कि मेरी डेटा की वेरिएंस के अंदर एक शिफ्ट आ जाता है, +1 वेरिएंस हो जाती है और मेरे डेटा के अंदर जो स्क्यू का फीचर है वो भी चेंज होता जा रहा है, मेरे डेटा के अंदर जो कर्टिसिस का फीचर है वो भी चेंज होता जा रहा है, एंट्रोपी भी चेंज होती जा रही है, राइट? सो वी विल बी एबल टू using this script we'll be able to generate some new data over over these 3 weeks that we've decided, or this data will look different from the original data that we used to do the modeling जो हमने अपना as baseline define किया है, right? But इस डेटा को अब मैं अपलोड करते हुए I've named it the banknotes target data store के ऊपर, और रजिस्टर जब मैं कर रहा हूँ इस डेटा सेट को, then I register it with a timestamp and give it the name banknotes target, right? मेरा target data set once it's been registered, मैंने पिछली iteration के अंदर 6 वीक्स का डेटा पकड़ के 6 वीक्स का डेटा जनरेट करवाया और फिर उन 6 वीक्स के वर्जन जो है मतलब वो इसके ऊपर अपलोड किए बैंक नोट्स के टारगेट के ऊपर. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन monitor the data drift between these 6 versions of the data that we have simulated and the original baseline version. Or yeah, let's do that. उसके लिए all we have to do is we have to create a data drift monitor, right? But वो data drift को monitor run करने के लिए you will need a compute target, right? और हमारे पास इस वक्त यहाँ पे एक already एक cluster exist कर रहा है जो मैंने पहले से create कर लिया. And the next thing we have to do is we have to define the data drift monitor. और हम डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटर को ये बताते हैं कि कौन से आपके फीचर्स हैं जिनके अंदर आपने ड्रिफ्ट मॉनिटर करी, राइट?
और वो फीचर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। और डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्टर को जिन डेटा सेट्स के अंदर से मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वहाँ पे आई टेल इट कि दिस इज माय बेसलाइन डेटा सेट and this is my target data set, and now figure out what's the difference between these two based on the features that I'm listing down, right? Based on these features, the data drift detector has to tell me how different the baseline data set is from the target data set, और उसकी frequency मैंने weekly set कर दिया कि weekly run कर ले। ड्रिफ्ट का मे बी मैंने एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया कि 30% ड्रिफ्ट से ज़्यादा है, then you know tell me what's happening. So once I've created this data drift detector, the next thing we have to do is we have to backfill the monitor, right? Or all that means is कि जो हमारे पास जो हमने डेटा बेसिकली जनरेट किया वो पिछले 6 वीक्स के लिए जनरेट किया ना, तो उसके साथ जो टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पे अटैच किया हियर, वो बेसिकली 6 वीक्स पीछे तक जा रही है। सो 1 वीक पीछे, 2 वीक पीछे, 3 वीक पीछे, 4 पीछे, 5 और फाइनली 6 वीक पीछे तक जा रही है। सो हम बेसिकली अपने जो हमने यहाँ पे डेटा ड्रिफ्ट का मॉनिटर डिफाइन किया है उसका डॉट बैकफिल फंक्शन कॉल करते हैं, जिसके अंदर आई एम टेलिंग इट के कितने टाइम पीछे तक तुमने देखना है फ्रॉम नाउ, और उस बैकफिल की बेसिस के ऊपर जो है ना डेटा ड्रिफ्ट को मेजर किया जाता है in the baseline and the target data sets, और उस ड्रिफ्ट के हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आ जाते हैं, और उन मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली ऑल वी हैव इज कि हमारे पास एक तो डेज फ्रॉम स्टार्ट आ रहे हैं कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स एंड सो ऑन, 6 हफ्ते पहले तक, बट वी ऑल्सो गेट के what's the percentage, what's the data drift percentage between the two data sets that it compared, right? So मेरे पास पहले data set के लिए ही I can see there is a 68% data drift, जिसका मतलब है it looks vastly different. अब इस percentage के ऊपर आप को basically आप उस threshold के साथ compare कर रहे होते हैं when you are creating alerts, when you are configuring alerts for automation or for sending mails to your team or whatever. But the point is कि अगर आपका data set in 6 weeks, अगर हम ये वाला formula जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं to create changes in the features, अगर इसी तरीके से features के अंदर changes आते रहे तो over 6 weeks your data can start looking totally different. There's a 95-96% difference in the baseline and the target data set. One other way to do it would be कि हम अपनी machine learning की जो machine learning studio है उसके अंदर हम अपने यहाँ पे data sets में जाएं, right? और यहाँ पे we see कि जितने भी डेटा सेट्स हम अभी यूज करते आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे रजिस्टर कर लिए, राइट? डेटा सेट्स के अंदर डेटा सेट मॉनिटर की एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ से भी वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटर, राइट? और इस मॉनिटर के लिए ऑल वी हैव टू डू इज यहाँ पे हमें एक गाइडेड व्यूअर आ जाता है जिसके अंदर वी कैन सेलेक्ट द टारगेट डेटा सेट, जो कि हमारा यहाँ पे बैंक नोट्स का टारगेट आ गया, और बेसलाइन डेटा सेट जो है उसका या तो हम सेम टारगेट डेटा सेट को ही एज बेसलाइन यूज कर सकते हैं,
जिसके अंदर हम स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर डिफाइन कर दें, यहाँ पे अगर स्टार्ट डेट मेरी पिछले महीने की आ रही है, अगस्त में से, 2 अगस्त से, राइट, तो इसमें से अर्लीस्ट को वो बेसलाइन यूज कर लेगा और बाकी आगे आने वाली डेट्स को जो है वो उनका ड्रिफ्ट मेजर करता रहेगा, या फिर वी कैन चूज अ डिफरेंट बेसलाइन डेटा सेट, जो इस केस में वो बाकी डेटा सेट्स में से कोई भी चूज कर सकता है। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने बेसलाइन एक अलग से डेटा सेट डिफाइन किया। So we can choose either of that. अगर हम different data sets में use करना चाहते हैं, then we can go with the first thing, जिसके अंदर मैं basically different versions use कर रहा हूँ और different part उसका use कर रहा हूँ to measure my data to. But let's stick with this. और उसके बाद we have to name some this data drift model. हम वो फीचर्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जिन फीचर्स की बेसिस के ऊपर वी वांट टू मॉनिटर दिस ड्रिफ्ट, कंप्यूट टारगेट सेलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी और वगैरह वगैरह, और जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर हम अलर्ट्स वगैरह अगर सेंड करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट ऑफर्स, तो हम ये काम यहाँ से कर सकते हैं। एंड वंस इट्स बीन डन, लेट्स से कि मैं 60% थ्रेशोल्ड सेट करता हूँ 1 आवर की लेटेंसी के साथ, तो और डेली की बजाय वी हैव अ वीकली फ्रीक्वेंसी, कैन क्लिक क्रिएट, और वो डेटा मॉडल जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। Okay, while this loads, maybe we can look at the previous model that I've run. So, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, उन्हीं नंबर्स को बेसिकली अगर यहाँ पे समराइज करें, यही जो नंबर्स हमें Azure की API से प्रोग्रामेटिकली रिट्रीव हुए थे, सेम नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 96% overall over the period of 6 weeks, we can see there is a 96% drift in the data, which is just over the top. और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके अंदर ड्रिफ्ट आ रहा है। टॉप ड्रिफ्टिंग फीचर्स मेरे कौन से हैं? थ्रेशोल्ड मैंने 30% इनिशियली सेट किया है। बेसलाइन और टारगेट डेटा सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट द रियली इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो जो भी मेरे पीरियोडिक वर्जन्स आते रहे हैं, उन वर्जन्स के अंदर एग्जैक्टली कितना कितना ड्रिफ्ट आता जा रहा है, वो उस ड्रिफ्ट मैग्नीट्यूड का ट्रेंड मेरे पास मौजूद है। मेरे पास बाय फीचर एक ब्रेकडाउन पड़ा हुआ है कि हर डेट के ऊपर मैंने जो 6 वीक का डेटा जनरेट करवाया था, हर वीक के लिए मेरे पास कितने कौन से फीचर के अंदर कितने परसेंट डेटा चेंज आता रहा, राइट। तो यहाँ पे मेरे मुझे ये नजर आ रहा है कि इन द लेटेस्ट वन in the latest one I can see Curtis is showing that 23% growth, skew is showing a 25% growth, variance is showing a 29% growth, और वो टोटल कुल मिला के वो 96% का आपको चेंज बना है। फीचर लेवल आप डिटेल्स देख सकते हैं। समटाइम्स इट विल हैपन कि आपके सारे के सारे फीचर्स नहीं इस तरह से वेरी करते जिस तरह से अभी हमने वेरी करवाया है। हो सकता है कि सिर्फ एक कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल हो या कोई एक ऐसा फीचर हो जो कि ड्रिफ्ट अपार्ट कर दे, तो उसको आप अपने इस फीचर लेवल ड्रिफ्ट डिटेल्स के अंदर आप ब्रेक डाउन देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर वो वेरी करता है। इसके अंदर मेरा ख्याल तमीर का भी क्वेश्चन थोड़ा सा कवर हो रहा है। आपको मुख्तलिफ मेजर्स नज़र आ रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर सेट चेक किया गया है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर डिफरेंट आ रही है। मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, देयर इज अ वॉशरस्टाइन डिस्टेंस। तो फीचर लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी वेरी करती रही है, और इसकी बेसिस के ऊपर जो है ना आप एनालाइज करके
अपने डेटा सेट को अडॉप्ट कर पाएंगे, अपनी फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर कर पाएंगे, और you will be able to tell when it is time to either update your data set or update your models which are dependent on that data set. So that was it about monitoring data depth. Let's go back to monitoring our machine learning models using application insight. तो अब तक हमारी ये service deploy हो चुकी है. The only change I have to do here is to enable application insights on top of this service, right? और एक बार हमारे पास ये applications की insight service enable हो जाए, then I get an endpoint basically जिसके ऊपर वो application insight करें, जो मेरा machine learning model है इस endpoint के ऊपर run कर रहा है, और इस endpoint के ऊपर I can basically send data and get my prediction. But remember that whenever I send my predictions, this is the code, this is the scoring script that is going to run. और इस स्कोरिंग स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक एप्लीकेशन इनसाइट के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट डाली हुई थी, एक लॉग क्रिएट करने के लिए, जिस लॉग के अंदर वी आर पुटिंग इन आवर डेटा जो रिसीव हो रहा है, और उसके अगेंस्ट जो प्रिडिक्शन जो कि जनरेट करके यूजर को ओवर वेब प्रोवाइड की जा रही है, राइट? तो when I make a request to generate predictions against this, so not only is this going to return me with predictions over this HTTP request, but it is also going to create uh, uh, a log in my application inside instance. सही है, and we'll take a look at that इसमें. So मेरे पास मसलन यही दो जो इंस्टेंस जिसके ऊपर मैंने प्रेडिक्शन जनरेट करवाई, उसका मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है that it is not valid, right? इसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट हुआ होगा इन माय एप्लीकेशन इनसाइट इंस्टेंस, राइट? और उस एप्लीकेशन इनसाइट इंस्टेंस को देखने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज गो बैक टू माय मशीन लर्निंग इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ. Right now I'm using this workspace that one of the students had already created. So when you click on the workspace, आपको यहाँ पे लेफ्ट पे काफी किस्म की चीजें भी नजर आ रही होंगी, राइट? इसके ऊपर आप एक्सेस कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं वगैरह वगैरह. आप अपना कंप्यूट इंस्टेंसेस और जो इसके अंदर क्लस्टर्स वगैरह रन करें वो भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं. But the thing that we are interested in from the perspective of monitoring is कि हमारे metrics या हमारे alerts कौन से हैं. Okay, wait, sorry. आपकी applications insight के इसके अंदर आपके ये वाले log जा रहे होंगे, तो what you need to do is you need to be able to go into your applications instance which is attached with this workspace, जो कि आपको यहीं पे overview के tab में मिल जाएगी, and you open that applications instance और इसके अंदर basically आपको वो सारे के सारे रिक्वेस्ट भी नजर आ रही है, सर्वर रिस्पांस टाइम जितनी रिक्वेस्ट हैंडल की गई है वो नजर आ रही हैं. बट what you can do is you can actually generate queries here to get to certain logs. For instance, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक लिखी हुई क्यूरी मौजूद है, right? With all this query is doing is basically getting all message types जिनका मैसेज जो है वो आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट में आ रहा था, और बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट के अंदर आउटपुट क्रिएट करती है, राइट? और हम इस सर्विस के ऊपर देख रहे थे कि कौन से लॉग आ रहे हैं, राइट? तो let me go back to my application inside instance.
यहाँ पे आई गो टू लॉग्स, ठीक है। और लॉग्स के अंदर ना मल्टीपल आपको प्री बिल्ट क्यूरीज भी नजर आ रही होंगी। एक तो वो क्यूरी है जो फिलहाल एग्जांपल के तौर पर यहाँ से कॉपी, लेकिन कुछ प्री बिल्ट क्यूरीज हैं जो कि आप रन करके यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू वांट टू डू दैट देन यू कैन ट्राई ऑब्वियसली। रिक्वेस्ट काउंट का ट्रेंड आप रन करके देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको रिक्वेस्ट काउंट ये नजर आ रही है, 4 बजे कुछ था और 6 बजे कुछ है। बट इन एनी केस यहाँ पे मेरे पास एक क्यूरी एडिटर आ जाता है जिसके अंदर आई कैन राइट डिफरेंट क्यूरीज एंड सी द रिजल्ट्स फॉर दोस। तो फॉर इंस्टेंस वही मैंने अपनी स्टैंडर्ड आउटपुट की जो क्यूरी रन की है उससे मुझे ये नजर आ रहा है कि आई हैव रन, आई हैव requested predictions from this model uh, 3 times. Once, twice at 4, 4:03, 4:07, and once just now at 6:24. This is obviously using a different time zone, so it's showing me that. But आउटपुट के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली वही जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखी थी जिसके अंदर डेटा और डेटा के अंदर जो भी मुझे रिसीव हो रहा है और प्रिडिक्शंस के अंदर जो भी रिसीव हो रहा है as we had we had written it just here, right? डेटा और डेटा में जो भी मुझे रिसीव हुआ था और प्रोडक्शन में जो भी रिसीव हुआ, right? So you can use this to do a lot of different things. This is quite a powerful tool. इसके अंदर आप मतलब किस्म के pointers ऐड कर सकते हैं। maybe HTTP request के अंदर अगर आप मतलब identifiers डाल के अपने इस मॉडल को क्यूरी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप यूजर आईडी वगैरह डाल रहे हैं तो you can even get your user ID into your application inside and be able to see कौन से यूजर ने कौन सा डेटा आप कौन से डेटा के अगेंस्ट प्रिडिक्शंस रिक्वेस्ट की थी एंड where that user is heading over there or yeah, so that's it for uh, monitoring your machine learning models and monitoring your data there. If there are any questions we can take them now. If there are not, then we'll take another short break and uh, open the floor for your practicals. So no questions. Before I end this session, I'll again reiterate, and I'll also throw a message about this in the WhatsApp group as a general announcement that we are going to have a class next week जिसके अंदर वी आर एक तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टेक्निकली कोड ओरिएंटेड, नॉट ओनली कोड ओरिएंटेड बट ऑल्सो थोड़ा बहुत हमने GUI साइड भी कवर करने की कोशिश की है जो मशीन लर्निंग सर्विस की, कि किस तरीके से हम इसके ऊपर मशीन लर्निंग सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा there is as we were discussing in the beginning of the class that that there is a big picture view about designing data science solutions based on different scenarios. इस तरह के चंद सिनेरियोज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे in our next class next week, and we will also take a look at some of the questions from exam dumps और हम उनको डिस्कस करेंगे इन द क्लास। और आपकी जो भी उन क्वेश्चंस के बारे में whatever kind of confusions you have regarding those questions, we'll be able to discuss those in our next session. उसके अलावा we will talk about a general landscape of what the tools of the trade are in machine learning and big data these days, apart from Azure machine learning. क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ Azure machine learning यूज़ कर रहे हो without touching whatever is out there.
चाहे वो आपकी कोई लार्ज स्केल डेटा बेसिस है, डेटा वेयर हाउस से अगर आप डेटा पिक कर रहे हैं, या आपके एज्योर की ही मुख्तलिफ अगर स्पार्क बेस्ड सर्विसेज हैं लाइक डेटा ब्रिक्स, या अगर आपके इवन ऑन प्रेम अगर आपके डेटा क्लस्टर वगैरह मौजूद हैं. सो we'll discuss those briefly and see how they relate to, you know, what is going to turn up on the exam actually. So हम ये एक combined session जो है ना, in our next class we'll be doing that. Okay, if there are no further questions, then we can take a break for an hour, and then we'll begin with your, you know, lab.